हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नॉर्मली मैं अपने चैनल पे व्लॉग्स बनाता हूँ। इफ़ यू आर न्यू हियर, डू चेक देम आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बट आज मैं एक एजुकेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड द एजुकेशनल वीडियो इज़ अबाउट मिस्टर बीस्ट। तो रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने पॉडकास्ट करा लोगन पॉल के साथ एंड उसमें उसने काफ़ी एजुकेशनल बातें करी जो हर किसी को, अगर आप 18 या 19 या 20 ईयर्स के हो, आप लोगों को सुननी चाहिए एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। यू नो इट इज़ वो यूट्यूब पे जैसे उसने वर्क एथिक है उसका, जैसा उसने अपने यूट्यूब का भी किंग है वो। मतलब यूट्यूब पे मंथली व्यू सबसे ज़्यादा किसको आते हैं, मंथली सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा किसको आते हैं, मिस्टर बीस्ट को आते हैं। और अगर आप उसकी लास्ट वीडियोस देखोगे, हर वीडियो 100 मिलियन व्यूज से ऊपर है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन क्रिएटर, नॉट लाइक टी सीरीज। वो तो फिर पूरी कॉर्पोरेशन मिलके चला रही है ना यूट्यूब चैनल को। तो या दीज आर द क्लिप्स फ्रॉम Impulsive podcast which is done by Logan Paul and very educational stuff happened there. And normally people इतना बड़ा podcast देखते नहीं है, तो I'm there for you. I'm going to help you to get the fruitful conversation which happened between Logan Paul and Mr. Beast. So let's get right into it. Incredible. Crazy. One of the things I like about your stuff is you are making it not okay for people to do bitch ass content anymore. You have made it, bro. Yeah. Like people would be like, I'm gonna count to 1,000. No, you're not. Count to 100,000. Yeah, no. Did you do 200? Yeah, I did 100, then 200, and then about like 320. I was just like, all right, I should do something else. Okay. तो पहली बात तो एक क्रेजी चीज मिस्टर बीस्ट के बारे में, अगर आपने उसका नहीं कंटेंट देखा है, उसने काउंटिंग करी थी, पता नहीं 200,000 तक 200,000 तक काउंटिंग करी थी और काफी मतलब 10 घंटे के ऊपर की पता नहीं फालतू की वीडियो बनाई थी उसने। मैं दिखा दूंगा सारी। ही इज क्रेजी यूट्यूबर एंड फॉर यू टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी क्रेजी, यू नीड टू बी क्रेजी। Whole life since then. So like I always believed in it. I just believed as long as like if other people were spending $100 on a video, and now I'm spending 100,000, but even back then 10,000. If other people are putting a few hours into a video, I'm putting a few days. Like I just knew eventually it would work out. Like there's just the difference is so, not to like sound egotistical, but that was always my viewpoint on it. Outwork. People may have talent. People may be smarter than you. Some people may be more prettier than you. Some people may have more support than you. मगर आपके पास क्या है? You can outwork them. उससे कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं कर रही, उसने बस outwork कर दिया उसको, अपने competition को, अपने competitor को. That's the thing to keep in mind. Outwork the competitor. Creative and structuring it like a business. Yeah, and like looking towards the long term in everything you do. Yeah, and you're 20 years old, dude, which is crazy. How old is Jake? Isn't he 20? Jake's 22. Wait, he's 22? I thought we were the same age. Nah, dog, you're... Oh, wow. Yeah, no, you're probably the youngest. 20 years के एज में था वो जब उसने इतनी सारी वीडियो बनाई। उसके तब पता नहीं शायद से 20 मिलियन सब्सक्राइबर थे when he was 20 years old. अब वो 22 का हो गया मेरे ख्याल से, और वो उसके 70 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। Oh. And also why you need to start early is that you can make mistakes. I mean, you don't have to, but you certainly can because you are young. And if you do mistake, people will say, okay, he's young, let him go. मगर old age में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि old age में आप सारे आपसे expect करते हैं। Now back to the video. You're extremely diversified. And the type of content, yeah, exactly, because that's the thing. Like, well, it's not even just in content, bro. Like you have so many different businesses. Yes, let's talk about that shit. Well, let's say you lose money in a video, you're like, well, Mr. Beast Burgers is popping off this week. Exactly. And by the way, who don't know, Mr. Beast के पास एक खुद की उसके एक बिजनेस भी है, बीस्ट बर्गर, जो उसने 22 इयर्स में चलाया था और अब वो काफी मतलब पॉपुलर हो गया अमेरिका में। ऑब्वियसली इन अमेरिका, इंडिया में भी आ जाएगा, मगर अभी के लिए वो अमेरिका में है पॉपुलर पूरा। 1000 कुछ उसकी फ्रेंचाइज है पूरे अमेरिका में एंड कनाडा में भी उसने शायद शुरू कर लिया अमेरिका, लाइक मैकडोनल्ड। ही इज ग्रेट बिजनेसमैन, आई थिंक एंटरप्रेन्योर। ही गॉट दैट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. Right, just bro, on your walks, you do your hour walk a night. You go, I'll just scroll through my contacts and call someone, see how they're doing, pick their brain a little bit. Like exactly, so much to be learned. Yep, and you're so good at that. And the thing is, like
that's what's sad is because so many like small YouTubers, they see it as like, oh, I don't like I see this all the time. Like a guy with 1 million subscribers will learn something new and they'll be like, oh, I don't want to teach my friends. Like they'll compete with me. It's like, you dumbass motherfucker. You pulled less views in the last 3 years than like I know people have on a single video. Like you teaching him isn't going to do anything. And so like they're so like caught up in like not sharing things and being secretive that like it's like you can okay. So like imagine a world where you have like 3 friends, and like when friend number 1 learns something, he teaches the other 2, and friend number 3 fucks up on a video and he teaches you guys, and you're all coming up together. Whereas if you're separate, you have to fuck up every single time. You know, so like if you each make 100 fuck ups, you could be like 300 fuck ups deep and learning. But if you're separate, you're only 100 deep. How often are you asking for help? Because I realize every day. when you open the door to me for like hey, let's just like bounce things off. I definitely like took advantage of that, which I want. Like I don't. Exactly. I don't Rule ask number for 1 help. is you got to give more, or give at least what you take. And if you do that, people will always teach you stuff. Say that one more time. You got to give at least what you take from someone. Which in the YouTube space is pretty easy for me because I can just teach people anything, and then I just hope to learn one thing from them. Classic. Always learning. Mr.beast is always learning. That is, the most important lesson to learn from Mr.beast. Always learning. उसने एक ही हैबिट है उसकी, वो हर दिन शाम को एक तो वॉक करता है फॉर हेल्थ पर्पसेस, एंड साथ में थेरेप्यूटिक कॉल्स करता है. कोई भी अपने कॉन्टेक्ट्स में से स्क्रॉल कर रहा है, किसी को भी नो हेजिटेशन, किसी को कॉल करके उसका ब्रेन पिकअप कर लिया कि हाँ कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब. और वो करके वो इतना बड़ा यूट्यूबर, उसने इतना सब कुछ सीखा है. वो 100 चीजें सिखाता होगा उन लोगों को, मगर एक चीज सीखता भी है खुद. ओके, पॉज. तो ये वीडियो शायद से कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाए, वीडियो डाउन हो जाए, क्योंकि मैं किसी और का कंटेंट स्टील कर रहा हूँ, चुरा रहा हूँ. मगर माई इंटेंशंस आर राइट. मेरा इंटेंशन है कि जो लोग उस पॉडकास्ट को नहीं सुनते हैं, वो 1 घंटे का पॉडकास्ट है, लोगों के पास टाइम भी नहीं होता सुनने का, जो नहीं सुनते हैं उनको ये बात मैं कन्वे कर सकूँ जो मिस्टर बीस्ट ने कही थी, बहुत सारी एजुकेशनल बातें. और इस वीडियो को मैं अभी एंड कर रहा हूँ, और एंडिंग में बस एक लास्ट स्पीच जो वंडरफुल है, बस आप सुन के देखो. The information that has been learned, which is fine. I mean, like some people do YouTube for fun, some people do it just to pay off their mortgage of the house. Like everyone has different goals. But if you really want to be the best in the goddamn world, it's like Michael Jordan says, you're not trying to get 1% better, you're trying to get 10,000% better. And if you do that every day, like it adds up. we don't want to play the game. We want to change the way the game is played. We want to dominate in a way. Yeah. As